Hi, hi guys. This is Anil Murthy here, and so we are trying to start the call right now, and let's have this discussion today. A very interesting topic, and this is about our great Mr. Modi ji, who is Prime Minister of India. So let me check the audio, everything. Do, do, do let me know if everything is going fine in the chat. एंड सो दैट नारी शक्ति की मतलब पैसा दो नहीं तो झूठे केस करेंगे। तेजस्वी कुमार, वंडरफुल तेजस्वी कुमार, बहुत बढ़िया बात आप किए हो। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा इसके जो विडजेट्स है आई विल जस्ट टेक ए लुक, इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ क्योंकि हमें वो स्क्रीन प्ले करना है। लेट मी सी, यस, ग्रेट। ओके, सो अभी जो सेशन चल रहा है उसके बारे में आई वांट टू सी, एंड सो दैट वी विल हैव so guys, join in, and let me see how to navigate because I'm still learning this particular software, and yeah, so I hope you are able to hear me, and just give me a second. I'm just working on it, and I'm working on the tools by going to the details and the pans and panels and all. So give me a second, please. Yeah. So I hope I'm able to get in properly, and I'm just looking into the system, and we'll start in just a while. We'll start in just a few minutes. Right. So thanks guys, thanks for joining in, and I'm just exploring the user interface of this particular streaming thing, and let me work on this so that everything is fine. We should not face any glitches. So I have to spend some time on looking into the technology part of it, and so let me see how this goes. Give me a second. Yes, Tejaswi Kumar, and voice is clear. That is great. So thank you so much. And let me see how best I can do some UI. So I will see how I can get the Modi ji's content on our session, so that you guys are able to see it. Okay, so I want to have an editing. I want some kind of a editing feature to edit and add some content to the session. Just give me a second. I'm just looking into the YouTube dashboard, and let me have a look. I can read your comments, which is great, but then I wanted to have some more control. I wanted to have more control on showing you the data. I mean, to share more things in the screen and all that. So I need a studio setup. So without that, I will not be able to change. I can only talk, but I may not be able to do much of it. Right. So this may create some noise, but just let me see if you guys are able to. Yeah, so let me check. Yeah, able to see these features. Okay, give me a second, and I hope you just let me know if you are able to see the screen with Modi ji there, and let me have a look.
Uh, oh, tell me if you are able to hear Modi ji. पहले मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पास 75 साल का अनुभव है। हमने 75 साल में कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। हमने 75 साल के अनुभव में नए सपने भी संजोए हैं, नए संकल्प भी लिए। लेकिन अमृतकाल के लिए हमारे मानव संसाधन का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, हमारी प्राकृतिक संपदा का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर के हमें चलना है। और तब मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा आज अदालत के अंदर देखिए, वंडरफुल, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति। जस्ट हैंग ऑन, व्हाट डिड ही से? हमारी अदालत में नारी शक्ति, अदालत में काम करने वाले नारी शक्ति, रियली यही बोले? थोड़ा पीछे चलते हैं, फिर से सुनते हैं। लक्ष्य को लेकर के हमें चलना है। और तब मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति इस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति इस मिजाज से, समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। सो गाइस, अदालत में जाइए, हमारी नारी शक्ति जो फीमेल लॉयर लोग हैं वो कैसे सब दे आर कंट्रोलिंग द कोर्ट सिस्टम और दे आर एबल टू बी इफेक्टिव। तो मोदी जी अपने सभी ये सब ग्रेटनेस बता रहे हैं। एक बात बताइए, यू आर एबल टू हियर मोदी जी ऑडियो? आई गॉट इट, आई हैव पॉज्ड इट राइट नाउ। क्या उनका वीडियो दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी हिज वीडियो और वीडियो इज नॉट प्लेइंग? या ही इज एड्रेसिंग वुमेन लॉयर्स, करेक्ट, प्रीतम पवार, यस। आपको वीडियो दिख रहा है या वीडियो नहीं दिख रहा है? आर यू एबल टू सी हिज वीडियो or not able to see the video? Video is also playing. Wonderful, wonderful, wonderful. So that is by the way good news if video is playing, because I was confused about it. I was wondering if video is not playing. दिख रहा है वीडियो भी, तो wonderful। तो ये हम करेंगे, इसमें बात करेंगे मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं, और मोदी जी के बाद में हम लाएंगे किरण रिजिजू जी, अपने माननीय इतने बड़े पढ़े लिखे, वो भी वकील का डिग्री है उनके पास, किरण रिजिजू साहब। तो उनका भी हम थोड़ा सा उनको भी सम्मानित करेंगे, राइट? तो इतने बड़े बड़े बातें तो थोड़ा सुन भी ले तो बहुत मजा आएगा। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं, बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। बाय द वे, खेल कूद में नारी शक्ति दिख रही है भाई। पीटी उषा ने 1980s में ओलंपिक तक पहुंच गई थी। तो पीटी उषा उस टाइम में थी, कॉमनवेल्थ में अपना फीमेल रिले टीम ऑलवेज जीतता था। तो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन आज नहीं, पहले भी किए हैं। अरे यार, वो कर्नम मल्लेश्वरी 2000 के आसपास में ब्रोंज मेडल जीत के आई थी। तो फीमेल प्लेयर्स लोगों ने कभी कुछ नहीं किया ऐसा करके जो बोलना वो गलत है। वो पीटी उषा थी, अश्विनी नाचप्पा थी। बाय द वे, अश्विनी नाचप्पा का जो बूथ में, जिस बूथ में वो इलेक्शन में वोटिंग करने आई थी, उस बूथ में मैं बैठा था।
2014 में अश्विनी नाचप्पा वहीं वहीं रहती है, मेरे घर के पास रहती थी बैंगलोर में, कोरमंगलम में। तो अश्विनी नाचप्पा बहुत बड़ी रनर है, बहुत सारे फीमेल लोगों ने बहुत कुछ किया। तो ये गलत बात है। अरे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कितने फीमेल जेल गए, हर हर कोने कोने से फीमेल औरतें जेल गए हैं, ये कोई बड़ी चीज है नहीं। ओके कि आज हो गया नारी शक्ति, तो पहले भी तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में थे, हर स्टेट से वुमेन हैव फॉट, हर तरीके से लड़ाई की है। तो ये कहना बहुत गलत बात है कि और वुमेन आज ही प्रोग्रेस कर रहे हैं, पहले नहीं होता था या अभी का गवर्नमेंट ने कर दिया। अरे इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, जयललिता कब चीफ मिनिस्टर बनी थी? 90s में बनी है जयललिता चीफ मिनिस्टर, अर्ली 90s में, राइट। तो और जयललिता अपने अपने कैपेबिलिटी से बनी है, या ममता बनर्जी अपने कैपेबिलिटी से बनी है, या मायावती अपने कैपेबिलिटी से बनी है, जो भी करके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये जो क्लेम्स है, ये सब क्लेम बहुत ही हॉलो है। ओके कि पहले भी होता था। और आप हिस्ट्री में जाओ तो हिस्ट्री में भी है, हिस्ट्री में भी जाओ तो राजिया सुल्ताना का बात ले लो, रानी लक्ष्मीबाई का ले लो। अरे राजिया सुल्ताना ने एक आर्मी बना करके जाके लड़ाई किया, वो सल्तनत के लिए, उसके बाप सल्तन था, और जो भी हुआ हुआ। तो फीमेल्स लोगों ने इंडिया में कहां पे डिसएम्पावर्ड थे, ये सच नहीं है। मैं अभी भी बताता हूं, 1980s में, मैं तो उड़ीसा का हूं, लेकिन 1980s में, इन 80s what happened is that there was one old lady of Andhra. She created a huge prohibition movement, alcohol prohibition movement, and this movement was so big that alcohol was banned in Andhra Pradesh, and people used to come in a train to Karnataka, drink and go away. They used to come to Kolar, drink and go back. Okay, उतना तक हुआ था। So and don't talk about it. Look at those rebels. Those rebels, Naxal and other rebels are there, who are outlaws and rebels. They are fighting against India. They have female cadres. छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, वो सब बॉर्डर एरिया में पूरा नक्सल जो भरे हैं, उसमें काफी फीमेल कैडर्स है। तो नारी शक्ति के सिर्फ इसी हिसाब से कि वुमेन आर वीक एंड हम लोग उनको ऊपर उठाया, दिस इज नॉट करेक्ट यार। दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल। हिस्टोरिकली देखो, कभी भी देखो, यस, women used to produce 6 children, 10 children, 2-3 children will die. So they had a limitation due to pregnancy. And today there are contraceptives available. There are all kinds of, control, birth control technologies available. So females today are free, just like men. So they can do whatever they want. Otherwise, females have to bear children. So now that the females are not bearing children till the age of 30, 28, 30, 32, many females don't have children. तो करना क्या है? दूसरे काम करो, जॉब में जाओ, आर्मी में जाओ, पायलट बनो, ओके, और बाकी सब चीज करो। whatever men can do, women can do. When I was a kid, I went to circus. Circus में females are also acrobats, men are acrobats, females are also acrobats. They are doing all the things that the men, many men cannot do. What the acrobatics that they are doing, or physical strength that they are showing, they can also do. See, what is the difference between, except the mind, except some body physiology, what is the difference between a man and a woman? There is no difference. So उसको हाईलाइट करके, ये करके, वो करके, इतनी बड़ी ड्रामा करने की कोई चीज नहीं है। whatever men can do, women can do. And they have always done it. LTT has a huge, female army. LTT जो रेबल है तमिलनाडु के, केरला के, सॉरी श्रीलंका के LTT को इतना बड़ा रेबल ग्रुप था। सो ये सब बड़े बड़े बातें कि फीमेल लॉयर्स कब से है? बहुत सारे साल से फीमेल लॉयर्स है, एंड दे आर फाइटिंग केसेस, व्हिच इज नॉट अ बिग डील। But Modi ji has jumped fully into these things, like और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। So women जो है सब कुछ हिसाब किताब से ऊपर है। So women are above everything. They are above all the parameters. Okay, so you have to understand why, where he is coming from.
from where he is coming from and saying that women हिसाब किताब से ऊपर है. मतलब एक्सेल शीट में आप ये नहीं लिख सकते हो कि आपने घर में कितना काम किया, बाहर में कितना काम किया, आपकी बीवी ने घर में कितना काम किया, हिसाब, क्योंकि वो हिसाब किताब से ऊपर है. आपने बीवी को कितना पैसा दिया, बीवी ने आपका कितना ईएमआई दिया, कितना डाउन पेमेंट दिया, आपने कितना ईएमआई पे किया, वो आप हिसाब किताब नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट डू एनी कैलकुलेशंस. How much EMI you paid, how much they paid, and what, because women are beyond all that. They are beyond the hisab kitab, beyond all the calculations. They are beyond. So they are beyond where? They are beyond the law. They are beyond everything. It is like जो बोलते हैं ना बिग बैंग. They are beyond the big bang. Big bang होने के बाद में the laws of physics came into being. Okay, so it is as if saying that they are before everything. Let us listen this again carefully. There again, let us see उसके सुनते हैं क्या बोल रहे हैं. और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है. हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देगी. वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी. सो बहुत कुछ देना है बेटियों को. ओके, बेटी डजंट मीन 5-year-old बेटी, 10-year-old बेटी. उनके लिए क्या देंगे वी डोंट नो. ओके, देयर आर सो मेनी बेटियां जो अपने बाप से बिछड़ गए हैं. उनके लिए क्या है नहीं है. इनके लिए बेटी मतलब ग्रोन अप वुमेन. ओके, करेक्ट. इनकी बेटी होती तो 30-35 साल की होती. मोदी जी की बेटी होती तो 30-35 साल की होती. सो उन बेटियों के लिए ही इज टॉकिंग अबाउट. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बेटियां जिनको बाप नहीं दिख रहा है, मां का कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है. उन बेटियों की कोई फर्क नहीं है इनको, राइट. वो बेटियों की ये सोच नहीं रहे. So when he is using the word daughter, do not think that he is talking about all these kids, female kids, girl child. He is also thinking about all these women who are adult women. Okay, adult women. So they are the beti for him, and he wants to give them infinite. So this is height of gynocentrism. Gynocentrism, like gynecology, is women-centric thought process. See, this is beyond feminism. Let us understand one thing. Feminism says gender equality. If you discuss with a female and say you call yourself a feminist, I want equal laws, I want equal, men also face domestic violence, then feminist will be in trouble. A feminist has to take pain to justify all the things whatever she is saying. So typically an average female may say I am a feminist, but then she is also swearing with equality. So feminism, she says that at least equality तो होना चाहिए, at least थोड़ा तो होना चाहिए equality. She will agree with you. But people like Modi ji, people like Venkaiah Naidu, people like all these traditionalist people, they will never agree for equality. ये फेमिनिस्ट में एग्री फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए फेमिनिस्ट राजी शायद हो जाएगी, बहुत ज्यादा फोर्स किया तो राजी हो जाएगी. लेकिन ये लोग जो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं वो एग्री नहीं होंगे, कभी एग्री नहीं होंगे. वो बोलेंगे मर्द अलग औरत अलग, एंड औरत के लिए सुविधा दो क्योंकि वो औरत है, ठीक है. और वो कभी भी आप इक्वालिटी की बात करोगे तो वो बोलते हैं ये छोटी बात है, दिस इज अ स्मॉल आइटम, स्मॉल थिंग. मुझे अभी भी याद है, एक बार एक बंदा ने 20 साल पहले वो गया सुप्रीम कोर्ट, बोला वाई वुमेन हैव टू पे 5,000 रुपीज लेस टैक्स. उस टाइम में ऐसा था कि वुमेन पेड लेस टैक्स देन मैन. वो पीआईएल फाइल किया, वाई वुमेन हैव टू पे लेस टैक्स, वाई मैन हैव टू पे मोर टैक्स. टुडे द टैक्स इज सेम, मोर और लेस, बट whereas in those days women had a special deduction or whatever. So 5,000 rupees was the deduction. See, if you are earning very less amount of money, like 2-3 lakhs or whatever, then 5,000 is a big amount in those days for as a tax rebate. Then the judges dismissed it.
saying that woman wears a sari. Do you wear a sari? औरत साड़ी पहनती है, तू क्या साड़ी पहन रखा है? सो डिसमिस कर दिया उसको डिसमिस कर दिया, केस को डिसमिस कर दिया. सो ये सब वही गाइनोसेंट्रिक मेंटालिटी से आता है. आप कोई भी रिलीजियस लोगों के पास भी जाओ, वो गाइनोसेंट्रिज्म में रहते हैं कि मर्द अलग औरत अलग, और इक्वालिटी की बात मत करो इन दैट सेंस. तो इसीलिए औरत को जितना भी हो सुविधा दें, उनको हिसाब किताब से ऊपर रखें. सो कीप देम अबव ऑल कैलकुलेशंस एंड गिव देम ऑल द प्रिविलेजेस. दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. ओके, एंड ही डजंट केयर. इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, बिकॉज ही इज कंप्लीटली गाइनोसेंट्रिक, एंड दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. मोदी इज ए ग्रेट मार्केटिंग पर्सन. All he believes is to create new markets. He marketed India in the foreign countries much better than Manmohan Singh and everybody. He does a lot of awesome marketing. And not only he markets, he also inspires his followers and bhakts to market. So the bhakts also get inspired by him, and then they do marketing. Okay. See, remember, Congress is a pathetic party. Let me be very clear. Aam Aadmi Party, Congress Party, they are leftists. Center left or leftists. They are a different breed altogether. But in what way Modi ji is better or BJP is better? That is the question we are pondering. So this is the whole structure that, again, let's listen. आप देखना, वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देगी. वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी. इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे, और ओजस्वी होंगे, और दैदीप्यमान होंगे. So what he spoke is about these things, बेटियों के लिए केंद्रित like करेंगे. he's talking about अमृत. मर्दों के लिए तो विष है, मर्दों के लिए for men it is poison, not any अमृत, right? So he is talking about all these things, and he knows false cases are filed. He knows all the things, but he is interested in carving solid female votes. And this is the strategy of this political party, that they will go beyond Congress party in developing a female vote base. So there is a competition between Congress and BJP. If you remember, Congress party did a lot of damage by passing DV law, totally one-sided. Even mothers were excluded. Mothers of a man cannot file a DV. Sister cannot file a DV on the bhabi if she is facing domestic violence. Men cannot file. Gay people, LGBT, they cannot file. So Congress party did all that. Then the Congress party passed the sexual harassment law, one-sided again. And then Congress party wanted to bring all kinds of laws. They did all that. BJP was also competing at that time. BJP was on back foot. So that is why BJP, was competing with Congress party. When it came to dividing the marital property, that law was coming in 2012. BJP actually forced the Congress party to become more radical, and both the parties together passed the bill in Rajya Sabha. So Congress and BJP passed it together. So BJP is in a way Congress B team. If you remember, Krishna Tirath was women's minister in Congress government till 2014. She lost the election, and Congress party also lost the election completely. So then BJP came to power, and Krishna Tirath then moved to BJP. If you see, every month some people or other from Congress are joining BJP. ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरे ये तो कांग्रेसी है, इसका बाप कांग्रेसी था. सिंधिया, माधवराव सिंधिया वजह कांग्रेसी, तो वो कैसे आ गया बीजेपी के अंदर? There are so many Congress people, they have changed sides and they have entered into BJP.
So in what way? The Gaurav Bhatia is there. He was in SP and he is now in BJP. Sajia Ilmi was in AAP. He is in BJP. See, BJP is. Are you guys able to hear me clearly? Just let me know. Are you able to hear me? Yeah. So this is Congress is, this is like a BJP is like a Congress B team. Okay, Congress B team. And if you remember how Modi is behaving like Indira Gandhi. If you have followed the politics of 1970s and 80s, Indira Gandhi became very strict. She did, she basically threw away Pepsi and Coke, IBM. She basically nationalized everything. She nationalized banks. She nationalized all public sector को nationalize कर दिया. And then she ran a socialist country. And she ran like a man, like a real man. So she defeated Pakistan, and then she helped create Bangladesh. She was doing all that, and internationally also she did all that. So Modi ji is like Indira Gandhi. And let me tell you, Indira Gandhi has misused police. Indira Gandhi has misused the governors. She dismissed the N.T. Ramarao government in Andhra Pradesh even when N.T. Ramarao has majority. She split the party. All those politics BJP is doing. Okay, so BJP is like Congress party with Indira Gandhi. Don't compare BJP with Congress party of Sonia Gandhi. Okay, BJP is like Congress party of Indira Gandhi's time. Okay, and Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, if you see, they have also done politics of religion. See, at that time, politics of religion was in some other state. Today, it is in another state. Leave it. Now, Indira Gandhi was very patriotic. She brutally went after Naxals. She was so patriotic. She brutally went after Naxals and crushed them. Okay, and she fought all these internal battles and the external ones. She got the nuclear test done in 1974. India was such a poor country because China got the nuclear test in 1970 or 71. India got the nuclear test done in Pokhran in 1974. So Indira Gandhi is comparable that way. And internationally, Indira Gandhi was very influential with all this non-aligned movement and everything. She was very, very influential. And if you have watched her funeral, like almost like 50-60 country heads were there, right? Now, this party, देखो India में ना, our politics has not developed properly like many Western countries. Okay, so all our political parties appear like leftists or center left. Even BJP appears like center left. Okay, किसी को पैसा दे देना, किसी को देना. See, the conservative politics and the liberal politics in India has not fully developed. So that is why these people keep moving here and there. Except Hindutva and nationalism, BJP may be a leftist party, or BJP may be even a center left party. Because if you are a center right party, you will talk about family, saving the families. You will talk about abortion issue. See, in America, George Bush passed a law or created some policies so that premarital sex is discouraged. So he wanted schools to teach against premarital sex. So in America, sometimes they marry very young. 19-20 also they marry. I know people whose daughter has married and her boyfriend married. They were only 19-20 they married. So they often say that get married, but don't do all these things and teenage pregnancies and all that. So that is how the conservative political parties in those countries think. But in India, Samajwad chalta hai, because there is a lot of poor people. So these people say, we will give you money, we will give you free tickets, we will give you this, give you that. So the conservative politics in India has not developed properly. Okay. So these people are for the namesake, they are all these things they do, but otherwise they are not really, that way, conservative. Now, let me do one